Shravani, Mr. Madam, and others who have joined this webinar. So, with this words and not taking much time, and with all hope that we'll be having a very good time listening to Mrs. Anu Khandari. As we know, Anu Khandari, she is working in as assistant professor in Hindu College, Amritsar, and would love to listen to her with a lot of hope of having a very good evening this Sunday with her lecture. Let us all move to Mrs. Anu Khandari for the lecture. Welcome, madam. Yes, Thanks a welcome, lot. please. Thank you very much, sir. Thanks for giving me this opportunity and this platform to present the paper on topic setting of priorities in the succession of life. Now, first of all, we start with the setting of priority. What is priority? Priorities are priorities are what help you to focus your time and help you succeed in reaching your goal. We have to need to prioritize to help you create an action plan to focus on one task at a time in order of importance. Goal setting is a very important part in our life as it gives us something to work towards and a way to measure your progress. अगर हम अपनी लाइफ में अपने गोल को प्रायोरिटी में नहीं लेके आते तो हम लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते. Goal setting it plays an important role in personal development. By setting clear goals, man can enhance motivation, full potential use करता है और continually grow करता है. सेटिंग गोल्स हमें अपनी लाइफ में क्लियर डायरेक्शन दिखाते हैं और सपोर्ट करते हैं. डेवलपमेंट हमारी होती है, हम सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है. बट प्रायोरिटी कैसी बनानी है? सम पीपल गिव प्रायोरिटी टू मनी, सम पीपल गिव प्रायोरिटी टू other things, some people give priority to happiness. Why setting priority is very important in life? It helps to progress in life, and in this way man productive एरिया में जाता है, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करता है और अपनी लाइफ को प्रॉपर वे से चला पाता है. टॉप प्रायोरिटीज हमें अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज को सेट खुद करना है, बिकॉज लाइफ एक फैसिनेटिंग जर्नी है जिसमें लाइफ में अप डाउन्स भी हैं, सॉरोज और जॉय भी हैं. इट इज नॉट लाइक ए बेड ऑफ रोसेस, जो हमने सोचा है वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. हमें अपने काम को पूरा करने के लिए अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ता है. इन इंडियन फिलोसफी वी हैव 4 आश्रम्स: ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम. जैसे जैसे लाइफ के पड़ाव बदलते जाते हैं, हमारी प्रायोरिटी भी बदलती जाती हैं. हर एक आश्रम में हम डिफरेंट प्रायोरिटी देते हैं. इफ वी सेट प्रायोरिटी एट राइट टाइम, वी डोंट फेस एनी डिफिकल्टी एट राइट टाइम. हम एग्जाम्पल लेते हैं साइकोलॉजी के रिक्सन, फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट की, जो कहता है कि एट द लास्ट जब हमारा टाइम पीरियड हम अपने वर्क करने की कैपेसिटी को कम कर देते हैं आफ्टर 60+, एक डिसअपियर सिचुएशन आती है, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जिसमें हमें गिल्ट होता है कि हम अपनी लाइफ में जो गोल्स सेट करने थे हम कर नहीं पाए. तो अगर हम अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज को सिस्टमेटाइज्ड तरीके से उसको राइट टाइम उसको सिस्टम में चलाते हैं तो हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं. जैसे आज के टाइम पे जो हम कॉलेजेस में देखते हैं, बच्चे अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं कर पाते. 4 आश्रम है: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास. ब्रह्मचार्य आश्रम में 1 to 25 में बच्चे का टाइम पीरियड है स्किल डेवलपमेंट का, उसने वैल्यूज सीखनी है और एक स्किल डेवलप करना है जिसके साथ उसने अपनी सारी लाइफ को चलाना है. अगर वो अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज को सेट नहीं करता, ही फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज प्रायोरिटीज सेट करना लाइफ में बहुत जरूरी है. और जब वो नेक्स्ट आश्रम में जाता है, गृहस्थ आश्रम में, तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है पूरी लाइफ में. अगर हम कॉलेजेस में बच्चों को लाइफ की प्रायोरिटीज के बारे में ब्रह्मचार्य आश्रम में टेल करते हैं तो वो अपने लाइफ के गोल को राइट वे से अचीव कर लेते हैं.
और ये मनुष्य के हाथ में है कि वो अपने प्रायोरिटीज को कैसे सेट करता है। अब प्रायोरिटीज को लाइफ में सेट करने के लिए हमें डिफरेंट चीजों को आगे लेके चलना पड़ता है। जैसे जो बहुत अर्जेंट हमारा वर्क है उसको इम्पोर्टेंट हम फर्स्ट नंबर पे देंगे, सेकंड नंबर पे जो अर्जेंट वर्क्स नहीं है सेकंड नंबर पे, अर्जेंट जो लेस इंपॉर्टेंट है और जो टाइम वेस्टिंग टास्क है उनको हम लास्ट नंबर पे देंगे। बट कई लोग अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सिर्फ मनी, वेल्थ, फेम इनको दे देते हैं। बट द मेन टॉप 5 प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए लाइफ में, दैट इज गुड हेल्थ। बिकॉज अगर हेल्थ गुड है, फिजिकल हेल्थ गुड है, तभी हम अपने लाइफ के सारे वर्क्स को सिस्टमेटाइज्ड तरीके से कर लेते हैं। फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, इट्स a very important task. Confidence, self improvement, money, work, third priority. And last is, अगर हम इन तरीकों को अपनी लाइफ में चीजों को राइट टाइम पे टाइम मैनेजमेंट करके प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, देन बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों का बैलेंस रहता है, जिसके साथ हम अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा लाइफ का मिशन क्या है? हैप्पीनेस और वेल्थ, मनी, फिजिकल हेल्थ, क्वालिटी टाइम विद फैमिली, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सम पीपल डोंट फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, दे मेक एम्स बनाते हैं और अपनी लाइफ को आगे चलाना शुरू कर देते हैं. बट सबसे पहले वी हैव टू चेक अवर मेंटल हेल्थ. जब हमारा कोई प्रायोरिटी सेट कर ली है तो हमें थोड़े दिन के बाद अपनी मेंटल हेल्थ चेक करनी है, क्या हम उसको लूज तो नहीं कर रहे. बिकॉज कई लोग अपनी प्रायोरिटीज को इस तरीके से सेट कर लेते हैं कि वो गोल को अचीव कर लेते हैं बट अपनी हेल्थ को खराब कर लेते हैं. और हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हमने सेटिंग करनी है प्रायोरिटी की, लाइफ में सक्सेस लेनी है, तो हमें अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है. अब नाउ बात करती है प्रायोरिटीज को सेट कैसे करना है. अकॉर्डिंग टू योर नीड, create a list of tasks. Creating a list of tasks which help you determine which you prioritize over others. किसी एक के लिए प्रायोरिटी हो सकती है उसका एकेडमिक ग्रोथ, किसी एक के लिए प्रायोरिटी हो सकती है उसकी लाइफस्टाइल, उसका फैमिली लाइफ. रैंक योर टास्क, एनालाइज ऑफ ईच योर टास्क एंड रैंक बाय देयर लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस. फिर हमें एलोकेट टाइम रिक्वायरमेंट फॉर ईच टास्क. सम पीपल इतना एकेडमिक ग्रोथ में इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी प्रायोरिटी को वो फर्स्ट सेट कर लेते हैं, तो फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. तो हर एक चीज को एक तरीके से सिस्टमेटाइज्ड तरीके से अगर हम उसको प्रायोरिटी को सेट करते हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता. हर एक प्रायोरिटी को लाइफ में ठीक तरह से चलाना, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो फिर हम रैंक करते हैं, एलोकेट टाइम मिलता है हमें, तो अगर हम ठीक तरीके से उनको टाइम को बांट लेते हैं तो एनालाइज कर लेते हैं हर टास्क को और देख लेते हैं कि हमने शेड्यूल बनाते हैं डेली प्रायोरिटी का कि हमें किसको ज्यादा टाइम देना और किसको कम, और उसके बाद हम लाइफ को आगे परटेन करते हैं. Some people have short term priorities and long term priorities. Short term priorities हम डेली वर्क्स करते हैं, होम फिनिशिंग रिपोर्ट करते हैं, डिनर, लंच. लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज जो लाइफ प्रायोरिटीज हैं, जो हमें हैप्पीनेस देती हैं, कि हम अपनी लाइफ में जिन चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या हम दूसरी अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को डिस्टर्ब तो नहीं करते. सेट गोल्स करेक्टली, सेट गोल्स विच आर अचीवेबल एंड मेजरेबल. क्या हम उनको यूज ए स्मार्ट मेथड करते हैं व्हेन सेटिंग गोल्स. मेक श्योर द गोल्स आर स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अटेनेबल है, रेलेवेंट है और टाइमली है. प्रायोरिटाइज वाइजली, ठीक तरीके से, बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी. लुक एट योर डेली टास्क एंड डिटरमिन इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट. समटाइम्स अपनी लाइफ में चीजों को ऐसे प्रायोरिटाइज करते हैं
कि वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, बिकॉज जस्ट लाइक वी हैव ए थॉट ऑफ प्रोसेस व्हेन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम इतने थॉट्स 90% थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं जो हमें गोल को अचीव करने के लिए हर्डल क्रिएट करते हैं. सो सेट ए टाइम लिमिट टू कंप्लीट ए टास्क. जब हमें एक टास्क लिया है उसको सेट टाइम करना चाहिए कि हम उसको लेके कितना फोकस है. क्या हम उसको अपनी डायरी लगा के उसको दिन में बांट लेते हैं कि 1 वीक के लिए इतना, सेकेंड वीक के लिए इतना, और नंबर एट द लास्ट हम उसको चेक करते हैं आफ्टर ए 1 डे एट इवनिंग और नाइट. क्या हमने जो सुबह अपनी प्रायोरिटीज लिखी थी जिसको हमने स्टार्ट करना था, क्या मैंने आज सारा दिन वेस्ट किया, क्या मैंने उस चीज के लिए एफर्ट्स किए, या मैंने आइडल लोगों की तरह लोगों की बात करके आज का दिन खत्म कर दिया. और अगर हम इस तरीके से प्रायोरिटीज को सेट करते हैं तो हम अपने गोल को अचीव करते हैं. कुछ लोग कम मेहनत करके अपने प्रायोरिटी को सेट करके लाइफ में सक्सेस हासिल करते हैं. कुछ लोग प्रायोरिटी को सेट नहीं करते, इधर से आया उधर से आया, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ. बट जब हमने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना होता है तो टेक ए ब्रेक बिटवीन टास्क. आई एम अगेन टेलिंग कि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हम गोल को अचीव कर भी लेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है. तो टेक ए ब्रेक बिटवीन टास्क. अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि हम एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो 2 दिन की ब्रेक लेके हम छोड़ सकते हैं उस काम को, ताकि हम उसको ठीक तरीके से बाद में कंप्लीट कर सके. और अगर हम उस काम को 1 दिन की ब्रेक लेके फिर एनर्जाइज होके वापस आके उस काम को हम डबल तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं. ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, यूटिलाइज ए कैलेंडर फॉर ए लॉन्ग टर्म टाइम मैनेजमेंट. हमें कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई काम करना है, तो अपने आप को ऑर्गेनाइज तरीके से करना पड़ता है. हम एक टाइम प्लान बनाते हैं, जिस टाइम प्लान को बना के हम उस टाइम प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, और उस टाइम प्लान के वर्क के अकॉर्डिंग हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं. प्लान ए हेड. आज आधा काम कर लिया, कल दूसरे का पार्ट ले लिया, सेकंड प्रायोरिटी ले ली, फिर थर्ड ले ली, ऐसे नहीं. बैलेंस बिटवीन ऑल द प्रायोरिटीज, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग. देयर आर सक्सेस, एवरीवन वांट्स टू गेट सक्सेस इन लाइफ. कोई भी अपनी लाइफ में फ्यूचर ड्रीम्स देखता है, हम सब देखते हैं. पर्सनल गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिविजुअल्स के लिए. हमारी अगर हम गोल सेटिंग ठीक तरीके से करते हैं तो हमारी लाइफ बेटर हो जाती है. इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस है. अगर ये सिस्टमेटिक प्रोसेस को लाइफ में हम अप्लाई करते हैं तो हम अपनी लाइफ में अपने जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं. एंड देयर आर फ्यू टिप्स जो हमें सक्सेस की तरफ जल्दी ले जाते हैं. चूज द राइट गोल्स, मेक इट फॉर्मल, डिवाइस ए प्लान, स्टिक टू इट. थोड़ी देर काम किया, उस पर सक्सेस नहीं मिल रही तो हम उसको, कई लोग लीव कर देते हैं. बट एक बार ना करने से, 2 बार ना करने से, 3 बार ना कंप्लीट होने से, तो फिर भी हम उस पर फोकस करें, उसको टाइम दें, तो हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं. बार बार मेहनत करने पर असफलता मिले तो समझो सफलता पास आने वाली है. वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड ऑन द रिजल्ट. If you are good at setting priorities, you will be better prepared to decide on goals. First of all, manage your stress level. There are 2 types of stress. One is negative stress, and second is eustress, positive stress, and second is negative stress. Eustress means positive stress which leads to growth, जो हमें पर्सनल ग्रोथ की तरफ लेके जाता है. पॉजिटिव स्ट्रेस, स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जब हम अपने गोल को सेट कर रहे हैं, प्रायोरिटी को, तो हमें स्ट्रेस लेना पड़ेगा. बट वो स्ट्रेस को हम पॉजिटिव वे से गोल को अचीव कर ले, दैट इज कॉल्ड द यू स्ट्रेस इन साइकोलॉजी. इट हेल्प्स टू अचीव द गोल. बट समटाइम्स हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते नेगेटिव स्ट्रेस ले लेते हैं. जब वो एक्यूट लेवल पे चला जाता है तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है. और आजकल जो heart attacks, there are so many problems in body. Why? Because sometimes we are having a acute level stress. हमें पता भी नहीं लगता और अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग भाग ही जाते हैं.
तो हम एक्यूट लेवल स्ट्रेस में चले जाते हैं। सो टेक द ब्रेक और अपनी प्रायोरिटी को थोड़ा सा लॉन्ग वे में लेके अपनी हेल्थ को बैलेंस करके बॉडी माइंड एंड सोल, देन हम प्रायोरिटी को गेन सेट करके उस गोल को अचीव कर सकते हैं। सो स्ट्रेस इंक्रीजेस तो प्रायोरिटाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, सेटिंग ऑफ प्रायोरिटी नहीं ठीक तरीके से हो पाती और नेगेटिविटी आती है। सो वी हैव टू फोकस, हमें चेंज करना है, अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही प्रायोरिटीज को सेट करना है। देन उसके बाद थिंक अबाउट योर पर्सनल वैल्यूज, स्पेसिफिक पर्सनल गोल्स जो हमें प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग wake up from the bed and start walking. Get ready for the things and organize things for a day, only for a day. People are living in the past and future. They don't live in the present. तो प्रायोरिटीज को हम प्रेजेंट लेवल पे लेते हैं, हम पास्ट मेमोरीज, बैड मेमोरीज को हमेशा अपने माइंड में रखते हैं, एक बुक की तरह अपने माइंड में चलती रहती हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अगर राइट वे से प्रायोरिटी को सेट करना है ह्यूमन बीइंग को, तो उसे फोकस ऑन द प्रेजेंट करना पड़ेगा। बिकॉज अब आप सब स्कॉलर्स हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं। एक घंटे में कम से कम 100-150 थॉट हम एक बार, दो बार, तीन बार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अभी भी आप मुझे सुन रहे हो, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, मैं बोल रही हूँ शायद कुछ और भी चल रहा हो साथ साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइज थिंग्स इन अ बेटर वे and live in the present moment only. Today is the day for doing. What will happen tomorrow we don't know. Set priorities, set according to the level of the person, उसकी potential के according. Number second, think about not about the future, not about the past events. कई बार हमें regret होता है किसी चीज के लिए, हम उसको negativity को ले लेते हैं तो अपने काम में potential नहीं दे पाते और प्रायोरिटीज को ठीक तरह से सेट नहीं कर पाते। प्रायोरिटीज को ठीक तरह से सेट करने के लिए हमें कहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ता है। सो नेक्स्ट थिंग इज, हमें एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। प्रायोरिटीज बाय वर्किंग ओनली ऑन थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट। 90% प्रॉब्लम्स आर सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स जो कभी होनी भी नहीं होती और हम उसको क्रिएट करते रहते हैं माइंड में। इट विल हैपन, इट विल हैपन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो प्रायोरिटाइज बाय वर्किंग विच आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। 90% जो फ्लॉलेस वर्किंग चल रही है थॉट्स में, उसको बाहर माइंड से रखना है। इट हेल्प्स टू गेट सक्सेस इन लाइफ एंड बी ओके। जो चीजें नहीं आप कर सकते उसके लिए आप उसको साइड पे कर सकते हैं। और ट्रैक एनीथिंग यू डू, रास्ते पे चलते जाओ, लिस्ट, कीप लिस्ट, एक लिस्ट लिखो। An important point is we are thinking about the last work achieving the goal, but we are sometimes we don't work on the priority. हम काम पे इतना फोकस नहीं कर पाते तो ओवर थिंक करना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम प्रायोरिटी को सेट करते हैं, अगर वो थोड़ा करना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंक बॉडी को हार्मफुल वे से खराब करती है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी। एंड अगर अपने राइट टाइम पे प्रायोरिटी सेट करिए और यू वांट टू अचीव द गोल, तो सराउंड योरसेल्फ विद द पर्सन, अदर पीपल हु आर एम्बिशियस, जो अच्छे लोग हैं, जो प्रोडक्टिव हैं, जो हमें आगे अच्छी सोच प्रदान कर सकते हैं, हम उनके साथ अच्छा सोच के कुछ आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा। एंड द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट स्टेप इज एनालाइज योर डे एवरी इवनिंग। हमें हर इवनिंग अपनी प्रायोरिटी को चेक करना पड़ेगा कि क्या मैंने अपनी आज, जैसे एग्जाम्पल है कि हम सुबह उठते हैं, 4 बजे तक कॉलेज है, तो क्या हम आके अपनी फैमिली टाइम को प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं। अगर ऐसे हम ह्यूमन बीइंग राइट वे से नहीं कर पा रहे, इट मींस हम एक तरफ से अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और सेकंड को लूज कर रहे हैं। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ। सो एनालाइज योर डे एट इवनिंग और एट नाइट व्हेन यू गो टू बेड, ताकि हम उसको जहां पे प्रॉब्लम आ रही है अपनी प्रायोरिटी को लेके, तो हम उसको राइट वे से ठीक कर सकें। एंड सो वॉक फॉर 20 मिनट्स ए डे एट इवनिंग, कि जहां पे आप अपना होल डे वर्क सोच सकते हैं कि जहां मैंने प्रायोरिटी सेट करी थी, क्या मैं उस पर काम कर पाया कि नहीं। एंड meditation is very important part while we work on the setting of priorities for getting success in life, because meditation हमें थॉटलेस कर देगी। जब मेडिटेशन हमें थॉटलेस कर देगी, जैसे 5 कोश हैं,
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जब सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जो समान समझता है आनंदमय कोश में, जो गुरबाणी में भी आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरुता पाया सह सेती मन वजियां वधाइयां। इट मीन्स जो मेडिटेशन करते हैं, सुख और दुख में लाभ हानि में जय पराजय में समान रहते हैं, तो वो अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके गोल को आसानी से अचीव कर लेते हैं। ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैनेज योर टाइम बेटर इन ऑर्डर टू बी अ रश। एंड आफ्टर 3 hours, जब इन अर्ली इन द मॉर्निंग एट 11 or 12 o'clock, टेक ए डीप ब्रेथ एंड थिंक कि जो आज आपने प्रायोरिटी डिसाइड करी थी, क्या आपने उस पर वर्क किया और मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। और जो अचीव करते हैं गोल को, वो इधर उधर नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स इन चीजों में नहीं जाते, वो सिर्फ फोकस्ड होते हैं, तभी अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। सोशलाइजिंग होना भी इम्पोर्टेंट है, बट सोशलाइजिंग मीन्स हम अपने इनर सेल्फ को भी के बारे में सोचें। अगर हमने राइट प्रायोरिटी सेट करके अगर गोल को अचीव करना है, अगर हम राइट प्रायोरिटी लाइफ में सेट नहीं करते, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। सेट गोल्स करेक्टली, focus not only to achieve goal, always focus on physical and mental health. Sometimes physically we are healthy but mentally we are not healthy. स्ट्रेस की बात करी थी, जो स्ट्रेस हम ले लेते हैं। और सेटिंग प्रायोरिटी में सबसे पहले हमने अपने स्ट्रेस को खत्म करना है। अगर हम सेटिंग प्रायोरिटी सेट करते अपने साथ में स्ट्रेस भी लेते हैं, तो इट मीन्स कोई उसका यूज नहीं हो पाया कि हमने लाइफ में प्रायोरिटीज को सेट किया और वी आर टेकिंग ए स्ट्रेस इन आवर बॉडी। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रायोरिटाइज टास्क करने चाहिए ऑन द बेस ऑफ इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी, ताकि हम उस गोल को कैसे अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। और जब हम लाइफ में प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क उसमें क्या आता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अगर हम टाइम को ठीक तरीके से मैनेज कर लेते हैं, तो हम अपने गोल को बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर लेते हैं। जैसे कई लोग टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं कर पाते, अपने प्रायोरिटीज को राइट वे से सेट नहीं कर पाते, तो दे फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ। जैसे ability to manage your timely effective वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेस स्ट्रेस होना चाहिए, तभी सक्सेस मोर मिलती है। बेनिफिट्स ऑफ मैनेजिंग टाइम, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्ट्रेस रिलीफ लिस्ट बना ली कि हमने क्या सोचा था और क्या किया। मोर टाइम, गुड टाइम मैनेजमेंट हमें एक्स्ट्रा टाइम देती है प्रायोरिटी को सेट करने के लिए, लाइफ में टाइम स्पेंड करने के लिए। And people who can time manage effectively enjoy and having more time and spend on hobbies and other pursuits that depends upon the person. More opportunities. Sometimes हम कभी कभी किसी से पूछते हैं, you have to set your priority in your life, what are your priorities? No, I have no priority. जैसे लाइफ आई जा रही है वैसे जी जा रहा हूँ। It's a very wrong way to live a life. And आज के बच्चों में जो प्रायोरिटी सेट नहीं हो पा रही, तो it creates a lot of problems in society also. एडिक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। नंबर सेकंड, बच्चे कमिट कर लेते हैं सुसाइड रिजल्ट्स को देख के, बिकॉज वो पास नहीं हो पाते। तो इट मींस उनको हम सिखा ही नहीं पाते कि आपने अपनी लाइफ की प्रायोरिटी को कैसे सेट करना है। बिकॉज उस टाइम पे बच्चे एडोलसेंस पीरियड में होते हैं, तो एडोलसेंस पीरियड में हमें बच्चों को टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ के बारे में एजुकेशन देनी है, ताकि वो जो स्टूडेंट्स हैं या हम लोग हैं अपनी लाइफ की अगर प्रायोरिटीज को सेट उसी स्टेज में सीख जाते हैं, तो थोड़ा टाइम स्टडी, थोड़ा टाइम एंजॉय, थोड़ा टाइम खाना घूमना, तो उसके साथ वो उसी एज में अगर प्रायोरिटीज सेट करना सीख जाते हैं, तो वो लाइफ में ज्यादा सक्सेस हासिल करते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ सेटिंग ऑफ प्रायोरिटीज हम पर्सनल ग्रोथ भी पाते हैं। पर्सनल ग्रोथ इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल्फ ग्रोथ। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। हम नई चीजें सीखते हैं, बिहेवियर्स, एक्शन, एटीट्यूड्स, हैबिट्स, रिएक्शंस टू द बेनिफिट्स। सेल्फ ग्रोथ हमें अपने करियर की तरफ फोकस करना, पर्सनल लाइफ दोनों की तरफ फोकस करना सिखाती है। अब अगर जो प्रायोरिटीज हम करते हैं लाइफ में, प्रोसेस ऑफ पर्सनल ग्रोथ हेल्प करती है प्रायोरिटाइज द थिंग्स इन लाइफ, बिकॉज
वो लोग जो ऐसे सोचते हैं फॉर सेल्फ ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ के लिए, वो अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज को प्रॉपर तरीके से सेट करते हैं। लर्न टू मेडिटेट, लर्न मोर अबाउट योर बेसिक नीड्स। वो अपनी बेसिक नीड्स को मेडिटेट करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पे अटेंशन टू योर इनर वॉइस, कि हमें अपने अंदर से कौन सी आवाज आ रही है और कैसे इस काम को हेल्प कर हमने कंप्लीट करना है। इम्प्रूव करते हैं अपने आप को, योर फोकस एंड मोटिवेशन। समटाइम्स हमारे में मोटिवेशन किसी वर्क को लेके खत्म हो जाती है और हम उसे अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, पे अटेंशन देते हैं इनर वॉइस को। और नंबर सेकेंड, वो बेसिक नीड्स को, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, वो फोकस एंड मोटिवेशन के साथ अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना पसंद करते हैं। और जब वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना पसंद करते हैं, जैसे मैंने पहले बात करी है पास्ट और फ्यूचर के बारे में, नो डिस्कशन, दे थिंक ओनली ऑन द प्रेजेंट व्हाट वी आर टुडे डूइंग। एंड इन दिस वे वो अपनी प्रायोरिटीज को ठीक तरीके से सेट कर लेते हैं। फोकस को इंप्रूव करते हैं, मोटिवेशन को लेके आते हैं आगे। काम योरसेल्फ इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट दे लिव इन ए काम सिचुएशन। और कई लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो हमेशा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहते हैं और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी काम रहते हैं, बिकॉज वो अपने गोल को, उस दिन को वेस्ट ना करके, उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके, उस डिफरेंट सिचुएशन में उस काम करके अपनी प्रॉब्लम से बाहर भी आ जाते हैं और अपने प्रायोरिटीज को ठीक तरीके से भी चला लेते हैं, जो पर्सनल ग्रोथ को साथ लेके चलती हैं। एंड सेट बेटर गोल्स फॉर योरसेल्फ, वो अपनी लाइफ में अच्छे गोल्स बना के चलते हैं और टाइम मैनेजमेंट को ठीक तरीके से लेके चलते हैं। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट अगर हम प्रायोरिटीज को सेट करते हैं तो वो हमें हेल्प करती है, और एक डेडलाइन बना लेते हैं कि हम ये काम को कब तक कंप्लीट कर लेंगे और कब तक हम उस काम को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी प्रायोरिटीज को चेंज नहीं करते, थोड़ा सा ब्रेक लेके उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड इन दिस वे अगर हम अपने लाइफ में गोल्स को राइट तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, अगर एक बच्चा, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, एक बच्चा है वो 10th लेवल पे उसकी साइंस नहीं अच्छी और वो बनना चाहता है डॉक्टर, तो इट मीन्स वो अगर +1 +2 में मेडिकल ले लेगा तो उसने प्रायोरिटीज साइड सेट नहीं करी। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स एंड टीचर्स कि उसको बताना कि अगर तू ऐसी प्रायोरिटी रखेगा तो यू विल फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ। एंड राइट टाइम पे राइट प्रायोरिटीज को सेट करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। सेटिंग ऑफ प्रायोरिटीज अगर हम ठीक तरीके से करते हैं तो वी विल गेट सक्सेस इन लाइफ। एंड एजुकेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वेपन है जो हमारी डार्कनेस को रिमूव करके हमें इनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाता है। तो समटाइम्स हम प्रायोरिटीज सेट कर लेते हैं पर उसको अचीव नहीं कर पाते, बट उसको अगर हम ठीक तरीके से सिस्टमेटाइज तरीके से चलते हैं तो हम उसको जरूर अचीव कर लेते हैं। अगर हम अपने गोल्स को ठीक तरीके से सेट करते हैं, क्या हमारे गोल्स होने चाहिए, बेस क्या हमारा गोल्स होना चाहिए, उसको ठीक तरीके से अगर हम सेट कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल करते हैं। अब अगर हम सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस की डेफिनेशन भी सब लोगों के लिए अलग है। किसी के लिए सक्सेस है एट द एज ऑफ 40 या 50 60, ए गुड हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एंड ए लिटिल बिट अमाउंट ऑफ मनी, गुड होम। पर किसी के लिए 60s की एज में है बहुत बड़ा घर, बहुत ज्यादा मेड्स। तो सेटिंग ऑफ प्रायोरिटीज डिफरेंट तरीके से हम अपनी, जो हमारी लाइफ के वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम उसको सेट करते हैं। तो अगर हम ठीक तरीके से उसको सेट करते हैं तो हम अपनी फिजिकल हेल्थ को भी नहीं खराब करते और मेंटल हेल्थ को नहीं खराब करते, तो तभी हम उस चीज को सक्सेस मानते हैं। अगर हम सक्सेस अचीव कर रहे हैं बट हम अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं उसके साथ साथ प्रायोरिटी को सेट करके, वी आर गिविंग अ 20 आवर्स फॉर सिटिंग, फॉर डूइंग द एकेडमिक वर्क, फॉर गिविंग एनी एग्जाम, तो इट मीन्स हम अपनी फिजिकल हेल्थ को खराब करके किसी चीज को, गोल को अचीव कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर इन द रॉन्ग वे। अगर राइट वे में हमें चलना है तो हमें अपनी प्रायोरिटीज को ठीक तरीके से सेट करना पड़ेगा, और अगर हम ठीक तरीके से प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, प्रॉपर प्लान बनाते हैं, उसको प्रायोरिटाइज वाइजली करते हैं, एक सेटेड टाइम लिमिट बनाते हैं टू कंप्लीट द टास्क, एंड उसके बाद उसको चेक करते हैं क्या मैंने उस काम को ठीक तरीके से कंप्लीट किया या नहीं किया, कहाँ कमी आई, और नेक्स्ट टाइम इस काम को इम्प्रूव कर लूंगा, तो फिर वो ठीक तरीके से अपनी लाइफ को
लेके आगे चले जाते हैं। और कई लोग एक बार नेगेटिव कुछ अचीव नहीं हुआ, उसके बाद सारा लाइफ उस प्रायोरिटी को लेके नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं और अपनी बॉडी पहले फिजिकल हेल्थ को खराब करते हैं, पहले मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं, और मेंटल हेल्थ के खराब होने के बाद उसके बाद उनकी फिजिकल हेल्थ डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती है। बिकॉज आई थिंक दैट्स माई पर्सनल व्यू, आई डोंट नो डू यू एग्री विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ प्रॉब्लम इन अवर माइंड, it disturbs our mental health, then it creates the problem in the physical health। और जब हम मेंटली ठीक होते हैं तो हम अपनी सफरिंग्स में भी उसमें अपना भला सोचते हैं कि हमें अच्छे तरीके से उस सफरिंग से कैसे बाहर आके उस लाइफ में प्रायोरिटीज को सेट करके अपनी लाइफ को आगे सक्सेस की तरफ लेके जाना है। आई थिंक इट्स अनफ फ्रॉम माई साइड। एंड अगर हम अपनी प्रायोरिटीज को राइट तरीके से सिस्टमेटाइज तरीके से फाइनलाइज करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। जब भी हम हारने की कोशिश करते हैं तो हम ये सोच सकते हैं, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने भी किसी से नहीं खुद से वादा किया है। एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द प्रायोरिटीज इन लाइफ। जब हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, अपने आप के बारे में उसको आगे लेने जाने सोचते हैं, तभी हम राइट को प्रायोरिटीज प्लान वाइज सेट करके तभी हम आगे जा सकते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही सब पड़ाते हैं, हौसलों में भी उड़ान होनी बहुत जरूरी है। इट मीन्स प्रायोरिटीज को राइट तरीके से हम सेट करके अपने हौसलों में उड़ान भर के तभी हम लाइफ में सक्सेस हासिल कर लेते हैं। और अगर हम राइट टाइम पे प्रायोरिटीज को सेट नहीं करते, एंड वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ टू सेट द प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटीज को ठीक तरीके से सेट करना फॉर गेटिंग द सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस की डेफिनेशन हम लोग अपने मन से लेते हैं, और ठीक तरीके से अगर हम चलते हैं तो लाइफ एक जर्नी की तरह, जो फैसिनेटिंग जर्नी है जिसमें अप एंड डाउन हैं, तो हम ठीक तरीके से उसको सर्वाइव कर लेते हैं। और इट्स द ड्यूटी ऑफ आर, बिकॉज वी आर द प्रोफेसर्स एंड वी आर द पेरेंट्स ऑल्सो, टू टीच आवर स्टूडेंट्स एंड किड्स, ताकि वो अपना जो सेटिंग ऑफ गोल्स की प्रायोरिटी है वो यंग जनरेशन ब्रह्मचार्य आश्रम में बनाए। मैं कॉलेज में भी बच्चों को यही कहती हूँ, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे अपने प्लान को सक्सेसफुली अचीव कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thanks a lot, Pramod sir. Thanks to all for listening my words. Thank you. Thank you, Mrs. Kandhari, for very good lecture. Well, what Mrs. Kandhari wishes to say is that in life we have priorities, and setting the priorities in the right direction is very important to lead a successful life and a happy life. But she says when she has a good understanding of saying that being successful is not important. Being healthy, being happy is also very important. One may be successful, but in the meantime, he may be losing his health or he may not be happy. So, achieving a sort of success or achieving a goal without having a good health or without achieving happiness, that is no success at all. So a successful man maybe say may not be happy. So what finally defines is if a man is healthy, happy, at the same time he has achieved something by making right priorities in different stages of life, and so that is the sort of aim that Anu Kandhari takes with her, because the ultimate aim is achieving success is important, but achieving success with good health and happiness is still more important, because you may be successful, but in the meantime, if you are losing your health, if you are not happy, so that makes no sense. He was pointing at the teaching professionals and the academicians. People are so much engaged in academics that they may be losing their family life. So that is disturbing. So she also speaks of directly or indirectly about work-life balance. Okay, work and life balance, work family balance. That is so important in life. So these all require setting priorities in the right direction. And she also talks about how priorities change with time. Well, from brahmacharya stage to grihastha, vanaprastha. With advancement of standard, the priorities also change so that they will be helping to the next stage. So thank you so much, madam. Well, one line is so important. This line that has come from you really counts. That what ultimately counts is happiness. What ultimately counts is health. So if you are healthy and happy, at the same time you are successful, that really counts. So with these words,
I open this talk for discussion, for more things to come in, for more suggestions, for more improvement, and let's see how it goes on. Well, I request some senior professors to comment on the talk of Mrs. Anu Kandhari. So to start with, let us invite Professor Srinivasan Krishnamurthy sir. Sir, please welcome, sir. Please, your views, observations, your suggestions, questions, please. Yeah. Uh, Thank you very much and good evening to all. That was a good lecture by Mrs. Anukandari relating to giving topmost priorities in life for greater success in one's own life is something really to be appreciated. I would say that it is a Sir, lack please, of. you are not properly audible. Sir, please. Uh, Pardon? You are not properly audible, sir. Is it not audible? It's not audible. Audible. Hello? Oh, this lies with me. Okay, Uh, okay. Hello? Hello? Is it audible now? Yes, sir, it's audible Hello? now. Okay. Okay. See, he has just diverted my mind suddenly, somehow or other. I can easily pick it up where the thread I have left, that it was a Lokati bonanza. I would say it was a good bundle of priorities, taking into account right from scriptures to modern resource management. He has well lifted everything. I mean, collectively, that was a wonderful thing. But I find that there is a lacuna. I won't say it is a lacuna, but it is a kind of suggestion from my side that it was a bundle offer in the sense you have given all the points in one stroke instead of giving all the priorities in a sequential, prioritized manner. That would have been finer. That's what I could, analyze from your presentation. You were jumping from one subject to another subject. That is, you were speaking about the ashrama dharma. From there on, you migrated to the modern scientific resource management of planning, balancing, goal setting, systematic process. All these things are, are pointed towards improvement of oneself is very good indeed. But you tell me the ways and means how the systematic process can be organized in real life. Work hard, setting focused, avoidance of stress, especially negative stress. When you were mentioning about stress, I am really, a little bit rather surprised to hear that stress can be defined in two different ways. One is positive, the other is negative. But as far as I am concerned, stress is only a stress. Whether it is whether it is a positive or a negative stress. So, how could it be two different names for the same stress has to be eliminated totally? That is what I feel. That is my perception. And then you spoke about that most of the people are not living in the present instant, they are focusing on the past and the future. I tell you, you were a little bit contradictory in setting goals. The setting goals, by really, it means that you are setting goals only for the future, not for the present. So there cannot be any ambiguity in that. Is it not for future success? You said you don't live on the present, the past and the future, but you set your goals for the future.
is something really contradictory. I'm not able to, I mean, get into your thread or point in this, but you have said it very nicely about goal setting and your future goals and working hard and stay focused. And finally, you are speaking about the mental health and the physical health. They're all really awesome, and I really appreciate and I thank you very much. And if you have any comments on that, I would request you to kindly elaborate on the same. Thank you, madam. Thank Mrs. you, sir. Thank you very much. Would you like to say something? Yes, sir. Right. Yes. Anybody? To this. Um, well, we'll come to this later on. Anybody who wishes to talk on this? Vrindavan, sir, please. Yes, sir. Okay. Uh, Madam, really, you have explained very nicely today's topic, that setting of priorities in succession of life. I think uh, succession of life or setting of priority always relates to ethical values. If we take priority as importance, then it must be given to the means, not to an end. Right, And sir. giving priority is not same for all individuals, because there is Absolutely no right, sir. common, there is no common process of priority. This is my little observation in respect of your presentation. However, you have delivered your paper very nicely. Okay, thank you. Thanks a lot, sir. Thank you, Professor Vrindavan Mahapatra, sir. Then we'll come to these two questions again. But in the meantime, may I request Ravani, madam? Madam, you wanted to say something, please. Madam, would you like to say something? Well, what I could see in the chat box is that Ravani madam tried to say that how this lecture was helpful and um, uh, how giving priorities, deciding things in the right time, right moment would really make life, things in life getting better and better. So that was the positive comment from Ravani Mr. Madam. Well, yes, madam. Yes, wanted to say something. Yes. Namaskar. Sir, Namaskar, namaskar. madam. Thank you very much, sir, for asking me about the observation. Sir, actually the presentation is very nice, presented by madam. Actually, the priority varies from situation to situation, time to time, and person to person. That very well narrated by madam. Very important thing that is she has mentioned that is time factor and living in present, that we have to give importance on present, because sometimes the persons are very much attached with their past and future matters, and present they just miss the present situations. So that is very important thing that she has mentioned in his talk, and other things that is very well said by her. Right decision in right time, that is one important thing. We have to take decision in right time, right decision at right time, because sometimes we take decisions but it is not in right time, that we have already passed the time and we just realize whether we have to take decision beforehand so that it would have better result. So it is very important thing that we have to take decisions in right time. So these are all my observations, madam. It very well. I extend my thanks to madam. Thank you very much, sir. Thanks a lot, Thank you ma'am. very much, madam. Thank you.
Thank you, Sramani madam. Well, to what Professor Srinivasan Krishnamurthy sir said, and two things come to my mind. Number one, regarding that ashrama dharma, actually, we have a theory called theory of expansion of self. In Indian philosophy, we have this theory. This theory says that our self expands as we move on to the stages from brahmacharya to grihastha to vanaprastha to sannyasa. So as the self expands, what is this expansion of self theory says? What does this theory say? This theory says, you see, when in the stage of brahmacharya, myself is restricted to my own discipline, acquiring an art, disciplining myself, studying the scriptures, and getting myself brushed up in various arts and crafts. So that is the stage where myself is concentrated about my own development. I'm not concerned about anybody else that time. So the myself is focused on my development. So that was the priority there. So when we transcend, when we move to the grihastha stage, the family stage, now we cannot think, a man cannot think about himself purely. He has a family there. He has to, then his self expands to the family members. So the priorities change. Once the priorities was purely about his own, the priorities turn to the family. So the priorities change. Now, when moving to the third stage, the vanaprastha stage. Now, once the duties of the family, once the family is settled, now the self expands to the society, to the community in which we live. So the priorities do change immediately. Okay, accordingly, the priorities change, and based on the priorities, things take on the course. Now, finally reaching to the sannyasa stage, now wherein there is no restriction, the self expands to the entire cosmos, to the entire world, the entire. Okay, so the no, he is not limited. The self is not limited to the self or the family or the community in which he lives. Rather, the self expands to the whole of the world, where it expands to the whole of the people. Okay, so this is how the priorities change from the stages of an individual from brahmacharya to the sannyasa. So this is how we connect what Anu Kandhari madam has said with the theory of expansion of self. This is how the priorities change from the stage one of man's life to stage four of man's life. So this is number one. Number two, regarding Professor Srinivasan Krishnamurthy sir's question. Well, sir, good, very good question. Well, Anu madam, she talked about living in the present, but well, it's good to be in the present. But the contradiction that Professor Krishnamurthy sir wanted to point out is that when we set a goal is about the future. Now, goal is about the future, but you say to be in the present. Well, but I see there is no contradiction. Well, I have a goal, but I have to think of the present. Suppose I have to reach the top floor. I am in the first stage of the ladder. So when I am on the first stage of the ladder, my concentration should be on the first stage itself. If I think I will set the foot right to the last step, I'll fall down. I'll not move up. So that is the problem. So when I'm in the first step of the ladder, I should be very much focused that I am on the first step, and I have a scope to move on to the second step. Okay, similar to the third and the fourth, and finally the time comes when I finally reach to the final step. That is the target. I have to reach to the top floor, and the ladder, the way I move from one stair to the other. So in each stair I should remember that I am on the first step or the second step or the third step. So I should be having that knowledge. Being in the present means where I am stationed. That is important. My goal is that I'm moving towards the goal, but while moving towards the goal, I should know where is my station. So that is more important. That is being in the present, what I could get from Anu madam. So and corroborating to this, what Brindavan Mahapatra sir said, well, we have an end, but means is more important. So means is the way. So moving on to the stage one to stage two to stage three, so finally to the final stage. So we are on the means. End is there. There is a target. There is a priority. Okay, but we are moving. It's a means. Okay. So while moving on, we should be focused on what conditions we are subjected to in the present. Okay, I want it to be something. Okay, in day one I cannot be something. I have to move towards that to be something. So while moving,
I should be in whatever stage I am. I should accept whatever stage I am. So slowly I brush up, slowly I grow up, slowly there is a development, and I elevate to the stages step by step, and finally the goal is achieved. So this is how we can think of. So this is my understanding about being in the present and having a target that is about the future. Thank you so much, sir. Well, well, this is how I see things. Well, anybody, Well, hello. Mr. Krishnamurti, sir, please. Yes, I sir. have a clarification from you, sir. You said that self expands, and the sannyasas about dharma, it expands totally. That means you are referring to the yogic or scriptural way of living, like from the manifest to the unmanifest. That means merging with the Brahman. Whereas, do you think that it applies for the commercial kind of management? It is only for the yogic management style of meditating, contemplating, and focusing, and expansion is possible only through there are various steps of meditation for attaining moksha. So, how can you compare the scriptural writing with the commercial base? Is my clarification. Well, rightly pointed out. Actually, when we think of these four stages of life, the problem with the modern man is we are not able to expand. Our expansion stops with the family, at best to the community. Even not fully expanded to the family or even restricted to the community. So we are in a stage, the modern man suffers from this. So earlier, we used to think about the moksha and we used to think about the world as a whole. So that's how the expansion of self theory very well fits there. But if we talk of the modern man, though there is a chance of expanding to the whole of the cosmos, are we really expanding? We are not able to even expand to the fullest to the family members. So this is how the modern man fails. But the theory of expansion of self doesn't fail. Man, as an expanding self, he fails individually, but the theory still stays. So it is possible on the part of a man to expand himself to the family, to the fullest sense, to the community without an ego in the fullest sense, and finally to the world at large. And we have seen people doing this, coming across this expansion of self, serving to the communities, to the masses, selflessly, totally abnegating themselves, all concerned about the well being of the world, okay, taking as a whole. So that is how the Loka Sangraha, okay, comes into being. Okay, so this is what I observe. Well, we have limitations, but the theory doesn't fail. This is my understanding about the thing. Okay, thank you so much, sir. Very good question, very nicely put in. So anybody having any other question, they are welcome. But in the meantime, I request our admin, Professor Pramod Kumar Das, to have his observations, comment, and his ideas to come forth. I request Professor Das. Thank you, sir. Am I audible? Both audible and visible, sir. Thank you. I really appreciate the paper, presentation, and beautiful responses made by Dr. Rao on behalf of the speaker. Annu Madam gave importance on the nature, capacity, and the possibility of human mind. She is doing this job here. Even physical health is disturbed by and is improved by the mind only. That means our existence is more psychic
than physical. This is our focus point. Number two, human mind is so programmed, so structured, it can do many activities at one time, but it can focus only one. Mind is so constructed, it can attend, it can do many activities, hundreds of activities, thousands of activities. We can't record that. But it can focus only one. It cannot focus two things at the same time. But subconsciously and unconsciously, mind is attentive to many facts. So whenever we focus our mind focuses on something, it also cannot attend all the sense organs. Suppose you are looking at the movie, the picture, the dance part, you cannot hear the singing part. That focused point, that is single, that is one, that is unitary. That means all other possibilities are absent. Focus on only one agenda of mind. So what that should be? If only one will be chosen out of 100 possibilities, which are also equally important, but one should be given the focus at a particular time. Suppose I am driving. I am driving means I am not a philosopher, I am not a professor, I am not a doctor. I am simply a man who is driving on the road. So at that time, my priority is to drive safe, nothing else. Because there is steering, there is brake, there is escalator, so everything is working properly. So my mind should work accordingly. We should learn this from each and every activity of our life. It is not an academic discussion. It is a real practice of life. It is a yoga. It is a type of yoga. And how much you keep your mind focused. Mind is active in many ways, but mind can focus only one thing at one time. Number three, she said, mind has double disciplines. One, mind can mind can focus, mind can be attentive, mind can accept, mind can prioritize. At the same time, mind can withdraw from that priorities. Yes, at a time X, I was there. But now I have a second priority. No, every priority is first priority because time has changed. So now you have become secondary. So the primary priorities will become secondary priorities according to the sequence of life, sequence of time, according to the change of things. Because many things are there in nature which are not under our control. We are the part of nature. So we have to choose, we have to focus on something which is good for me and Lokasangraha, for all at this moment. Because this moment may be proved bad for the whole community, and that will be a very black sign on my character and on my life. I can't live a good life having this bad name, bad act. So this is the possibility of a human mind that only therefore priorities differ. Why priorities differ? Because many minds, many thoughts. The more you groom your mind to focus on the present, that is called meditation. Meditation is exactly that. The more you train your mind to focus on the present, and you should
prioritize on which your mind should focus, then you are truly a rational being. So this is her contention regarding the possibility of a mind, and at the same time she is saying that the mind that helps you to grow, that mind also can help you to fall down if it is not properly balanced. So mind, we should drive our mind. We are driving our vehicles, we should drive our mind. So I really appreciate this presentation, and this is very optimistic. In this presentation, we should learn that life should be lived. Life should be lived. We are not living life. We are passing time. We are passing time out of. We are suffering from false imaginations. We are roaming in future and past. That should be, mind should have pratyahara. Mind should be out of those unnecessary burdens, engagements. Mind should have a space to move, and as two steps in the cloud. Because the long path is not seen to us, it is the limitation of our mind and our epistemology. That much we see, that is the present, as Professor Dr. Rao said very beautifully. If there are 10 steps, and if we are in the first step, that first step is our life. We live in that first step. So we should have a beautiful dream. Dream should be there, but we should be, our mind, the nature of mind is that it can't focus on many things, it will focus on only one thing. We should channelize that mind to focus on the present only. If mind will focus on something other than present, then that is the whole crisis. The attempt is to make our mind focused on the present. If this is successful by a presentation, by an instruction, by education, then our mission is justified. Thank you, madam. Thank you, Dr. Rao. Today you made this evening very meaningful by your beautiful response of the questions of Dr. Srinivasan and very beautifully Bundaman sir said that everybody has his autonomy, his likeness to prioritize some according to his wish, according to his desire, because man is a free being and man is a rational being. So every man is free to choose his or her priorities according to the existential compulsions. Very nicely discussed. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Rao. Over to Dr. Rao. Thank you, Professor Das. Very beautifully, you tried to synopsize the entire thing, and the proceedings and the responses that followed. Really beautifully, you have done this. Well, one more thing that left, which Professor Srinivasan Krishnamurthy sir tried to learn, tried to understand this. Well, Anu, madam, spoke of stress in two different ways: positive stress and negative stress. And that was again a problem. Stress is stress. What do you mean by positive stress and negative stress? So I tried to see something like this. You see, there are certain areas where we really enjoy working on those areas or in those areas, and there are certain areas where we do not like to be a part of our life. So suppose, say for example, say in the recent times, Professor Das was given an opportunity to talk before a crowd of say 2,500 or 3,000 people. So I say this would definitely build a sort of stress, but that was a positive stress, because that was an opportunity for Professor Das to speak something before a crowd of 2,500 to 3,000. So stress can be positive that way. Suppose if you are enjoying with certain work, even though you are overloaded with that work, your mind will not go dull.
your mind will not be dysfunctional. Rather, your mind will turn to be more active because you are enjoying that work. Even though there is a lot of work to do, you have to address something before a number of people. The stage is so big, so huge, but that is the thing you have been admiring for. That is the thing you love the most. So that, even though that is a tough job to face, but that will not bring a stress in the sense normally stress is taken to be. That would account to a sort of positive stress. But if Professor Das is asked to do something which he doesn't like at all, okay, even though there is a small thing, minutest of thing, but that is an area which he doesn't like, which he doesn't fancy about. Now he is asked to do something of a sort which he doesn't enjoy, which he doesn't like. So even a small thing would bring in a stress, and that will be defined as the negative stress. In that sense, stress would be negative. So if you are enjoying your work, how voluminous that work may be, how difficult that work may be, how challenging that work may be, okay, there is lot of stress definitely. Even if I am asked to talk before say 2500 people, a crowd with 2500 people, definitely it will build in a sort of stress. But I'm in job, so that will build in. If I take that as an opportunity, even though a sort of, you see, it is not that easy, you going before a crowd and speaking, okay, like the way you speak here. So that definitely builds in a stress, but still you are enjoying your job. So the stress would be there, but you take that as an opportunity. So that will boost you positively because you are enjoying the work that you are doing. So that's how it builds in a positive state to your life. So that's how we find a positive stress. So this is how I take things. Okay, thank you so much. I loved all the three questions that Professor Srinivasan sir tried to put, and I have learned from this. Thank you so much. Well, Naren, Brindavan, Naren yes, sir. sir, Naren sir, Yes, sir. Naren Yes, sir. sir. Yes, sir. Myself is Brindavan Mahapatra, not Brindavan Behra. Please. Okay. No, I said Brindavan Mahapatra, na? No, you told that Brindavan Behra first time. Okay. Oh, correct. So, I correct. So much, listen, Naren sir, sir. I have given top priority today in attending the webinar instead of visiting the Durga Mandap in different places. So priority is very important in life. Okay, thank you. Okay. Thanks for your priority. And one more thing, I have posted three books in your address, philosophy family books. Okay, maybe you will be receiving tomorrow or day after. Thank you so much. Well, because your Kailas Mana sir is absent today, so though it is I should not share, but still I request Professor Das to propose a formal vote of thanks. I request Professor Das to be a part of the. Thank you, thank you, sir. Thank you. I really am. I first thank you, sir, because uh, today your performance and your response that was beyond the role of a moderator. Okay, okay, okay. That is so. Yes. I am really grateful to you. I am grateful to Anu Madam for selecting a very practical, having practical relevance. The topic, that's how should we give priority to life. This is really a problem, really, and that is more problem with the children. Thank you, madam. Thank you, Bundavan sir, for your presence and for your priority to be present, to be with us. Thank you, sir. Thank you, Really, sir. really, Thank you. really, really, really. Philosophy is living. We are living philosophy. Now, Pramod sir, Practical. now you are at Noaigad or Atpuri? Puri, sir. Okay, okay, okay. In Thank you. in holidays, sir. Oh, sir. And thank you all. Thank you, Sarpani Madam. Thank you, Srinivasan ji, for your beautiful observation and very critical observation. And we always appreciate that. There should be criticism in discussion so that we can come to a conclusion. Thank you all. Thank you all. With this, the session is declared closed. Thank you. I also thank Professor Das. Thank you. Namaskar. Thank you, everybody.
Namaskaram. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you.